हेलो एंड वेलकम बैक। मार्केट्स ने अच्छे लेवल्स फ्राइडे सेकेंड हाफ में एक आधी घंटे में जो मूवमेंट किया अराउंड 200 पॉइंट्स, तो हायर लेवल ऑफ द रेंज जो एके ने हमें सुझाई थी लास्ट वीक, वहीं पे कहीं ना कहीं बंद हुआ। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ यूएस के साइड से डेवलपमेंट या फिर जो थंपिंग विक्ट्री रही एनडीए की, जितना अभी हम शूट करते वक्त देख पा रहे हैं अराउंड 209 सीट्स पे ये आगे चल रहे हैं और बोल रहे हैं मोटा मोटी यही कुछ क्लोजिंग फिगर्स आने चाहिए। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब हायर साइड ऑफ द रेंज आ गए, इस बात की तो खुशी है, बट नेक्स्ट वीक क्या होगा और कैसे सिचुएशन बनेगी उसके लिए चलते हैं एक ही के पास। हाय, गुड इवनिंग। Good evening, Rachit. How are you? आई एम गुड, आई एम हैप्पी, यू टेल मी। Good, very good. It's been, I would say, it's been a very eventful week. अगर आप देखें तो ये वीक एटलीस्ट बुल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा है. Now like I said, ये पिछले I can say 5 to 6 weeks से ऐसा हो रहा है. We are moving up continuously. अगर हम अक्टूबर फर्स्ट वीक से देखें तो हम वीक ऑन वीक अपसाइड दे रहे हैं. Each week we compile a group of factors. इसमें कुछ तो रियलिस्टिक एक्चुअल डेटा और ये इस टाइप के फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे मार्केट जा रहा है, एंड कुछ एंटिसिपेटरी हैं जो मतलब अ लॉट इज बीइंग प्लेड ऑन बाय द मीडिया ऑन दोज फैक्टर्स एज वेल. जैसे यूएस ट्रेड डील हो गई, ये हम पिछले एक महीने से सुन रहे हैं. यूएस ट्रेड डील हो रही है इसके एंटिसिपेशन पे. यूएस रेट कट्स, इंडियन रेट कट, all the anticipation and everything. So there are two different factors which are contributing together for the upside that we are seeing each week. Okay. And what is happening in the week itself before going into the weekend, because इतना hyped up market में कोई बड़ी position लेके नहीं जाना जाता है. hype up होके वीक जाता है, लास्ट कपल ऑफ डेज में थोड़ा बहुत उसमें आप समझिए थोड़ा सेल ऑफ आ जाता है. So that, and to the extent that that is covered by the actual data, we see an up move in the market and then we settle. Last 2 or 3 weeks से तो यही देखने को मिल रहा है. अगर वीकली वीक चार्ट देखें, हर वीक क्लोजिंग लेवल्स भी देखें, 25,300, 25,700, आई थिंक 25,800, 795 if I'm not mistaken. राइट. 25,500, ये जो टिपिकल लेवल्स है जो सारे ट्रेडर्स और ये ऑप्शंस वाले बात करते हैं कि इस पे स्टॉप लॉस बड़ा है, इस पे स्टॉप लॉस मेजर सपोर्ट जोन है, ये उसी टाइम उसी रेंज में बंद होता आ रहा है अभी तक. सो व्हाट हैज हैपेंड दिस वीक इज आल्सो द सेम. A lot of optimism was there. Lot of first, let me tell you about the factual things. Inflation number came in at surprisingly low numbers. Yeah. So so a lot has been started to play about our RBI policy in December. It gives them a leeway of about 25 basis point rate cut. To be honest, मेरे को लग रहा है कि 25 basis point rate cut आने का था और आएगा. इन्फ्लेशन, हाँ मतलब I feel आने का. I don't see a reason why RBI will not cut the rates, especially the focus, because the focus is there on consumption. Right. And there might be a lull because October figures are very skewed because of the GST, this thing. Maybe we do not see that kind of figure in November. There might be a reason building up to again boost consumption with a fresh short, जिससे RBI रेट काटे. Okay, this lower inflation is just वो fuel to fire का काम है कि भाई हम रेट तो काटने ही वाले थे. Now we have enough reason क्योंकि we don't have to worry about inflation. That is one thing. Okay, that's one thing. A lot has been played on the US-India trade deal again this week.
I, frankly speaking, Rachit, I do not know why it is so relevant right now when we have been, hearing about this deal happening, not happening, not happening for the past 6 months, 8 months. Frankly speaking, जब हो जाएगी मैं तब बिलीव करूंगा. मैं इस न्यूज आइटम को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, ज्यादा वेटेज नहीं देता हूँ. एंड सूनर और लेटर आई फील मार्केट्स विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस. गेट द मतलब मैं आप मेरे को एक बार, दो बार, तीन बार बेवकूफ बना सकते हो, फिर इवेंचुअली मैं आपका गेम समझ जाऊंगा, फिर मैं बेवकूफ नहीं बनूं. तो वो बात है कि क्या अगर अगर बुल्स ने ये किया है, या व्हाटएवर द न्यूज फ्लो इज देयर इन द मार्केट, ये न्यूज अब न्यूज फ्लो रहती है और एक्चुअल इवेंट नहीं होता है ना, तो धीरे धीरे वो इररेलेवेंट होने लग जाती है. राइट. शेर आया, शेर नहीं आया, शेर आ गया, खा गया, कोई फर्क नहीं पड़ा. गॉट इट. कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वही हो जाएगा. सेकेंडली, I'm surprised that a lot of big companies are still coming out with their results. In fact, in this week, we saw Ashok Leyland, great results. Asian Paint, excellent results. Of course, you can say that Diwali और ये सब का टाइम था, तो पेंट्स एंड ऑल का सीजन है, तो एशियन पेंट गुड. Correct. Plus, I think Tata Power and all these companies, some of the big names came up with their results this time, and all of them were pretty good results. So so that is again, that justifies to an extent the upside in the market. ठीक है, our situation is compared to last December or last February, we are doing much better. 10 months down the line, we are doing much better. Corporate results are showing that. Figures of GST are showing that. Inflation is getting better. So ये तो सारे ये factors हो गए जो हमारे intrinsic economy के actual data point है जो अच्छा है. To that extent, market ऊपर जा रहा है, no problem. Everything is sustainable because we are actually, that is happening. Okay. Now the part which is hyped up, our rate cut, Bihar elections, US rate cut, and now US getting out of the lockdown, the US government getting out of the lockdown. I don't see that being such, I don't see these being such major game changers or major defining factors for our markets. Right. Why? I'll tell you. See, US में तो जो हो रहा है वो हो रहा है, it is a very very cascading side of, अगर आप बोलो भी कि उसका इम्पैक्ट आता है, तो वो आप बोलोगे कि यूएस में अगर चीजें अच्छी हो गई, बेटर हो गई, इट विल बी गुड फॉर आवर कंपनीज व्हिच आर स्पेसिफिकली गिविंग आउट गुड्स एंड सर्विसेज टू द यूएस. तो वो बहुत कास्केडिंग इफेक्ट है, एंड इट इज वेरी इफेक्टिंग अ वेरी वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ पर्टिकुलर, nothing to do with the macros of this country. Okay. Dusra, Bihar elections. Yes, I agree that to an extent it is very very legitimate. It was very important, because of Nitish Kumar being a part of the central government also, his support being very very essential for BJP. But Rachit, honestly speaking, I don't think anybody had a doubt that NDA will do it. हाँ, I agree. डबल सेंचुरी किसी ने नहीं सोचा था. majority and above हर किसी ने सोचा था. Okay, so I think the last 30 minutes of what you saw today, 3 to 330, जो 200 पॉइंट की रैली आई है निफ्टी में, I think it could be attributed to this landslide victory. Okay, but again, will this sustain? I don't think so. This is just a reaction. You have to understand that आप जब दाल बनाते हैं तो आप तड़का डालते हैं, तो ऊपर से एक फिज आती है, वो फिज आपके 5 सेकंड लास्ट करती है. So this was the fizz. It lasted for 30 minutes, but it is not taken to the next week, is it? मेरे कहने का मतलब है 25,750 अगर चल रहा था निफ्टी, 25,950 तक ऊपर, और आई थिंक 900 के ऊपर बंद हुआ है, 25,910 बंद हुआ है निफ्टी.
If this is attributed to Hmm. the landslide victory in Bihar, okay, will this sustain on Monday? No. अगर इतना पॉइंट की रैली आनी है एंड वी आर एट्रीब्यूटिंग दिस टू बिहार और लेट्स से बीजेपी इज BJP's got even more stronger. BJP was always strong in the political scenario of this country. With this, they have got even more stronger. Hmm. Okay, so what is the marginal impact? There is hardly any marginal impact. It is more of a sentimental boost that it has given to the system. और वो सेंटिमेंटल बूस्ट में रचित आपको भी पता है कि सेंटिमेंटल बूस्ट या सेंटिमेंटल डाउनसाइड दे आर जस्ट मार्केट स्विंग्स. तो ये 200 पॉइंट का एक स्विंग समझ लीजिए आप, वो वापस आ जाएगा. टेक्निकली अगर ये नहीं होता तो आज 25,750 25,800 के बीच में क्लोजिंग होनी चाहिए. सो कमिंग टू द नेक्स्ट वीक, now because it is closed up above 25,900, traders might create a long position क्योंकि ये एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करके बन हुआ है. तो that might be a point to consider, that traders might create a long position at those levels. तो अगला अपसाइड क्या दिखता है? Again, the last intraday high that we made in this recent upside, 26,100 and something or something. I think it was like 26,137 or something like that. So मुझे लगता है कि I think that will be a zone which will be again very difficult to cross. अगर आप if you remember on Thursday yesterday, if you see the chart also, the markets took a lot of effort to actually cross 26,000 level and hit 26010 for a second only, and then they corrected. But Right. the struggle from 25,950 to 26, वो सिर्फ 50 पॉइंट की जो स्ट्रगल थी, it took a couple of hours actually. There was so clearly, in this zone, that 25,950 to 26,100, there is a lot of supply that is coming in the stock market. Right. सो अगर हम मतलब जैसे बात करें कि फ्रेश हाई निफ्टी का है, तो ये सप्लाई जोन पूरा का पूरा ना, इट हैज टू एग्जॉस्ट, द सप्लाई हैज टू एग्जॉस्ट इन दिस जोन, देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ मूविंग अप. और ये एफआई फिगर्स देख लीजिए, ये सप्लाई एफआई की आ रही, तो वो सप्लाई कब एग्जॉस्ट होगी? अगले वीक में होगी? मुझे नहीं लगता. इफ यू आस्क मी फ्रैंकली, आई डोंट सी मार्केट लाइफ हाई नेक्स्ट वीक. Can the market cross 26,000 next week? Yes. Will they do a closing? Again, I can't say. It can, on a Monday, a random 150 point upside can happen. 26,050 टच किया, वापस नीचे आ गए, वो हो सकता है. Got it. But what will be then the range for the next week? देखिए, ऊपर में मेरे हिसाब से टू क्रॉस 26 to 26,050 it will be tough. तो वो मैं रेंज बोल देता हूँ 26,000 to 26,100 आप समझ लो. और नीचे में 25,500 600 should be a decent support. 25,300 is obviously my medium term longer stronger support. As you saw last week also, I mentioned 25,300 to be very crucial, and 25,314 से घूम गया था बाजार. तो मुझे वो क्या, वो थोड़ा टेस्टेड सपोर्ट है. So anything negative also comes, I'll be more confident of that not breaking. 25,500 might still be fragile. Right. Got it. So for the next week, as we have practically ended with the results season and no big news is expected, no big data is expected, we might expect the market to have a mundane movement. And as we have seen a landslide victory in Bihar by 200 seats, AK has shifted his levels 200 plus
to the previous levels from 25,300 to 25,800, and now it is 25,500 to 26,000. But any major news coming in the week which we are not expecting, we might test 25,300, and to higher side, say 25,100 would be the point, 26,100 would be the point wherein we'll be Right. ठीक है. So let's see how things pan out in the coming week, and with such kind of events and so many things happening, I think markets also need some rest, and it might rest a bit in the coming week. But as always, it was amazing talking to you and learning about how the things are panning out, and hope to catch up next week on the same show. Have a happy weekend. Thank you. Happy weekend. Bye bye.